very good evening friends. My name is Mukul and welcome to my YouTube channel. And मेरे पीछे खड़ी है My Apache RTR 204V and this is a BS6 2022 model. So yeah, let's start with the walk around. इसके फेस से स्टार्ट करते हैं. So as you can see, फेस के अंदर पहले आपके यहाँ पे हेडलाइट आती थी, that is LED that was LED. सो ये TVS ने चेंज करा है. का ये एक LED में आपको स्ट्रैप मिलेगी. लेट मी शो यू. या सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. From the meter console, man, you can see there is yeah, let me show you how it starts. So yeah, this is how it starts. It says gear up and the rider name Mukul is showing there. These have the fuel economy, the time, the urban sports mode. Like there are 3 modes available: trip A, trip B, trip C. There are 2 buttons where the information can be toggled, as I toggled it or to the trip B. And now it is like you can change average speed, service due, all the things which can be filled in this. So you will get all the information. This is also like Bluetooth, so where you can connect your device and you will get the information related to your messages, your calls, and about the navigation as well. And about the clutch, as you can see, there are 2 different things from the other bikes. The first one is the Showa suspension. As you can see, this is the first in segment where you will get a Showa suspension in 200cc bike, and which is from TVS in this segment, man. So this is Showa suspension, which is really good, and this is can also be adjustable, so you can adjust it to the high setting and to the soft setting according to your body weight. And these have also something different, the adjustable clutch and the brake, man. So you can see there is a tab 1, 2, 3 numbers are there. So basically you can accordingly adjust as per your hands. If we are coming on the engine, man, so this is that comes with the 197cc oil cooled engine, so which produce around 20.82 PS of power, that is equal to around 9000 RPM. This is a really good, and it comes with a 5 manual gearbox. And yeah, if we talk about the seat are very softer side. Like I am riding it from 1.5 year, but still I have not any problem with the seat as well. The pillion seat is also really comfortable, man, because the TVS is also work on the everything they can do. The pillion seat is also very good. The grab rail are stud, and like it feels like it is something strong that they have given. The back side is something like this. They also have the halogen indicator, the front side and the back side as well, as you can see. So, and as you can see, that is like machine gun exhaust. As I told you, यहाँ पे आपको 3 modes मिलते हैं. The first one is rain, the second one is urban, and the third one is sport. So basically modes are like rain में आपका ABS ज़्यादा इंक्लूड होगा, पावर कम हो जाएगी. सेम है सेकंड वेल, जिसके अंदर आपका ABS थोड़ा और कम हो जाएगा, पावर आपकी बढ़ जाएगी. एंड द थर्ड वन इज स्पोर्ट्स, जिसके अंदर आपका ABS ऑन द इमीडिएट ब्रेक पे ही इंक्लूड होगा. अदरवाइज यू कैन गो विद द फ्लो, यू कैन यूज़ द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस बाइक. सो गाइज, तो ये थी अपनी RTR का वॉक अराउंड. तो मैं आता हूँ अपने मोटो व्लॉग में. लेट्स राइड विद दिस बीस्ट. I am riding this beautiful Apache RTR 204V. This is a very beautiful machine. TVS ने अपने इंजन पे इतना काम किया है, so like this is feel so refined. Like आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. It is very refined engine. The gearbox is very smooth. Like, and the slipper clutch working very smoothly, man. Just like, see, you don't need to do anything. Bike will do for you. You just need to think, give an order and he will do for you, man. अब मैं चला रहा हूँ तीसरे गियर पे. सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप स्पीड चाहे धीरे कर दो, चाहे तेज कर दो, कुछ करो आप. बाइक इज नॉट गोना डिसअपॉइंट यू.
in any condition. Okay, wait. तो मैं हमेशा स्पोर्ट मोड यूज़ करता हूँ बिकॉज बाइक ऑलवेज शुड बी इन देयर जेन्युइन पोटेंशियल. So see, you can see the handling man. आप इसे कहीं भी मूव लीन करो, दैट इज़ नॉट एन इशू. बाइक इज़ रियली कंफर्टेबल. जैसे कि आप देख रहे हो जी टी टी आर इसके अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. मैं दोनों हाथ छोड़ के चला रहा हूँ एंड द हैंडलिंग एंड द बैलेंसिंग ऑफ दिस बाइक यू कैन गेस कि वो कैसी होगी. अराउंड मैं 500 मीटर से ऐसे चला रहा हूँ बट नो प्रॉब्लम मैन. मैं छोड़ रहा हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ. सी आई एम यूजिंग माई फोन, बाइक इज़ रनिंग ऑन हिज ओन. तो ये आई लाइक दिस काइंड ऑफ फीचर्स मैन. जो आपको छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको अच्छी लगेंगी. जैसे स्लीपर क्लच है आपका. स्लीपर क्लच इज़ वेरी फाइन, वेरी स्मूथ मैन. Hello friends, really sorry for the voiceover video because of mic issue. So as I have told all the features related to the TVS Apache 200. So now the question is क्या Apache RTR 200 4V क्या 2024 में worth it है? So guys, Apache RTR 200 is one of those bike जिसे recommends करने से पहले मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता because it is an all-rounder bike. स्पोर्टी लुक वाली एक अच्छी बैलेंसिंग हैंडलिंग वाली बाइक देख रहे हो लाइक कॉलेज के लिए या डेली लाइफ के लिए रेगुलर यूज़ के लिए, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. ऑल्दो दिस कम्स विद डुअल चैनल ABS, सो देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द सेफ्टी. सो अगर इसे एज एन ऑलराउंडर प्रोडक्ट की तरह देखा जाए तो ये सारे ही बॉक्सेस को टिक करती है. So after telling you all the features and the details, I can definitely say you can go for it, and this is a value for money product as comparison with the other bikes in this segment. So friends, ये था Apache RTR 200 का review. So thank you very much for watching the video. Please like and subscribe. Thank you.